So, good morning, one and all, and thank you so much for joining us for one day webinar on nano based drug delivery system as well as design expert software. So I just want to introduce Professor Priyanka Rathore, ma'am. She is an accomplished associate professor with a strong academic and professional background in the field of pharmaceutical sciences. She is dedicated to achieving excellence and demonstrating proficiency in her work, marked by a combination of strong interpersonal and technical skills. Her commitment to innovation and talent has made her a recognized figure in the pharmaceutical education and research sector. Professor Rathore is currently pursuing her PhD from Bundelkhand University, Jhansi, with a focus on pharmaceutical research. She holds a master's degree in pharmaceutics earned in 2008 from Dr. H.S. Gaur University, Sagar, Madhya Pradesh. During her academic journey, she achieved remarkable milestones, including qualifying for the GATE 2005 with an impressive percentile and receiving a junior research fellowship from AICT. Her passion for learning and academia is evident through her consistent academic performance. She has authored various international and national research publications and book chapters, demonstrating her deep knowledge and expertise in this field. With over 11 years of teaching experience, including as an associate professor and assistant professor, she has made significant contribution in institutions like Bansal College of Pharmacy, Sathya Sai Institute of Pharmacy, RKDF University, and the Saga Institute of Research and Technology Pharmacy. In her current role as an associate professor at Saga Institute of Research, Technology and Science Pharmacy, since November 2022, she continues to inspire and mentor the next generation of pharmaceutical professionals. Professor Priyanka Rathore's research accomplishments are noteworthy, with several publications and presentation in reputed journals and conferences. Her areas of expertise encompass a wide range of topics, including novel drug delivery system, formulation, development, and evaluation. She is not only a profile researcher but also actively participates in workshops, seminars, and conferences to stay updated with the latest trends and advancements in pharmaceutical sciences. Furthermore, her involvement in organizing various events and her contribution to education have earned her several awards and grants, demonstrating her dedication to the field. Professor Rathore's unwavering commitment to pharmaceutical education and research continues to inspire her students and peers alike. So, we welcome you, ma'am, Priyanka, ma'am, for today's webinar on nano-based drug delivery systems, recent advanced developments, and future prospects. So, welcome, ma'am. And I want to request all the participants to put your queries in the chat box, or you may also raise your hands and you can ask queries after the webinar. Thank you so much, ma'am. Now over to you, ma'am. Thank you so much, sir, Shukla sir, for giving me this opportunity. And I'm very much delighted with your invitation. And uh, it's just a great opportunity for me to deliver my experience on nanotechnology on this international webinar. So thank you so much once again. And now, sir, have you given me the Yes, ma'am. rights to share the screen? Yes, ma'am. Welcome to all the participants on this webinar on nano-based drug delivery system. I, Priyanka Rathore, Associate Professor from Sagar Institute of Research Technology, as sir has introduced me in a very well manner. So now let's, without wasting the time, let's start nano-based drug delivery system. Today we will discuss about its recent development and future prospects. As the term is very small, that means the nano, but it's covering the in the drug delivery system, it is covering a vast majority. जितना term छोटा है nano, उतना ही it is developing, it is continuous going on in the drug delivery system. आप इसके साइज जितना आप इसके साइज पर जाएंगे अगर, तो you can see it is an emerging technology to it is an emerging technology to just
developing our drug delivery system in such a small and a nano size, and we are creating very intense methodologies for the very lethal diseases. बहुत सारी ऐसी lethal diseases हैं जिनमें हमारी nano technology is emerging as a good technology. It is a science of technology which is dealing in engineering, pharmacy, and in various science field to achieve a very nano size particle size. So the nano size drug delivery system, it is not going on in the medicines, but it is also using in various engineering technologies. Also, we can design various type of devices for diagnosis purpose, because मैं मानती हूँ कि जब तक अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, before starting the treatment, first we should know the good knowledge about the disease mechanism, how the disease is going on, how the cells are interrupting in that disease, how the cells are involved, tissues are involved. So the diagnosis purpose is very much important. और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जहां पर हम इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वी डोंट नो द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज्ड सेल्स, लाइक कैंसर. ठीक है, तो कैंसर में जिस तरीके से अगर इफ वी नो द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ द कैंसरस सेल्स, हाउ दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग द हेल्दी सेल्स, then only we will be able to design such type of design, such type of delivery system which can effectively work in the cancerous cell. And that and apart from that only, उसी की ही कारण cancer is such a lethal disease. First thing, we should have the good knowledge about the diseased cells and tissues. So for that purpose, nano devices are developing and they are just creating a very much कहना चाहिए very much boon for the medicines and drug delivery system. So nano devices, nano drug delivery system, these are the upcoming delivery system. Research is going on from the last 10 to 15 decades on the nanoparticles, but still we are in the research phase. Nanotechnologies continuously develop हो रही हैं. We are, आप आगे के slides में देखोगे कि we are developing so many types of delivery systems, but the work is going on. Abhi bhi we can't say these are working in the various fields, like in cosmetics also, in engineering also, in nano devices also, nano sensors also. But still abhi बहुत सारी चीजें फिर भी nano technology में we have to achieve, because जब भी कोई टेक्नोलॉजी होती है, कोई डिवाइस होता है, कोई डिलीवरी सिस्टम होता है, apart from its advantages we are also having their limitations. और जब हमारे पास कोई चीज limitations में होती है, we just work on with the research to just cross the barrier, cross the limitations, and make it more fruitful, make it for advancement for our future aspects. So nanotechnology is a very good delivery system, एक advancement है, but the work is still going on, research is still going on this. It helps in increasing the efficacy and minimize the side effect. As we can say, जब भी कोई ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिस्कवर होती है या हम किसी नई रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं, अब मेन मोटो इज फर्स्ट to develop the therapeutic to maximize the therapeutic efficacy of the drug and to minimize its side effect, because we know targeted or site specific drug delivery system can be easily achieved with the nanotechnology. हम बहुत अच्छी तरीके से nanotechnology से controlled release system design कर सकते हैं. We can fabricate the targeted drug delivery system, we can fabricate the site specific drug delivery system, and these all the drug delivery systems in that manner they are just minimizing the drug disposition या फिर पूरी delivery system जो drugs आपकी पूरी body में travel करती है, we can overcome that when your drug is going only reach only to the diseased site, diseased cells, diseased tissues, then only we will get the best therapeutic effect of the drug. And we if we stop that delivery system in going on a non-targeted side, non-diseased cells, non-diseased tissues, then we can easily minimize its side effect. So we can yes.
Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. So nanotechnology is a vast science which is dealing with continuously on affecting on making the therapeutic efficacy and minimizing the side effect. Various materials are working on this. The various lipids, various polymer-based nanoparticles are designed. They are designed in a very good way and improved the pharmacokinetic as well as the biodistribution of the drugs. We can say uh, the polymers are playing the best role in designing the nanoparticles, and with the polymers and with using the different type of atoms, molecules and supramolecules, we can design and we can fabricate the nanoparticles in our desired manner. आपको जिस टाइप का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है उस टाइप का हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं with the help of nanotechnology, with the using of some lipid, with the using of some polymer, and using various type of atoms, molecules. As we can see in further slides, dendrimers, liposomes, fullerenes, these are the those type of nano-based drug delivery system in which the atoms and molecules are designed. And we are continuously working on this to make the nanoparticles in the very small size. We continuously working on this. We continuously making the efforts to decrease the size of the drug delivery, to decrease the size of the drug so that it can easily cross the blood-brain barrier. It can easily go through the inside the cells in cancerous cells. It can easily cross the tight junctions, and then only we can get the good effect, good therapeutic effect. As nano refers to the 10 to the power minus 9 meter, it is just you can imagine our single hair. It is about 100,000 meter in width. So we can say हमारे हेयर के भी जो हमारा हेयर है दैट इज 100,000 की अगर विड्थ का होता है तो नैनो पार्टिकल इज 10 to the power minus 9 meter. It's so just small. It is so many times smaller than our single. So nano size is you can see it's a very small size. Bacteria, virus, influenzas, they are also in nanometer size. And आप अपनी फॉर्मुलेशन को नैनोमीटर्स पे जब ले जाते हैं फ्रॉम 1 to 1000 nanometer, we can design the different type of nano based drug delivery system, and then only they can create the history in the treating against the various type of lethal diseases. Certain advantages, as we have discussed, the site specificity, improve the solubility of highly lipophilic drug. Nano delivery system जब हम डिजाइन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है that we can easily incorporate the hydrophobic drug inside that shell. नैनो शेल्स आप देखोगे, आप नैनो पार्टिकल्स को सिर्फ स्फेरिकल ही इमेजिन मत करिएगा. इट कैन बी इन अ डिफरेंट इन डिफरेंट शेप्स. इट कैन बी लाइक अ ट्यूब, इट कैन बी लाइक अ ब्रांच, इट कैन बी लाइक अ फर्ली एक हेयरी स्ट्रक्चर. तो अलग अलग तरीके से नैनो पार्टिकल्स आर डिजाइन एंड डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपको कौन किस तरह की ड्रग उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, वेदर योर ड्रग इज हाइड्रोफोबिक or hydrophilic, we can easily incorporate such type of nanoparticles and encapsulate our drug according to that. अगर आपकी drug hydrophobic है तो you can use certain types of hydrophilic junctions. कुछ hydrophilic heads we can use in hydrophobic heads we can use, inside which we can easily incorporate our drug surrounding by the hydrophilic environment, so that जब जैसे ही आपका ये नैनो सिस्टम अगर बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो फ्रॉम द हाइड्रोफिलिक जंक्शंस इट कैन इजीली रिलीज द ड्रग, एंड फ्रॉम इनसाइड द हाइड्रोफोबिक कॉम्प्लेक्स हम बोल सकते हैं उसमें से आपकी ड्रग कैन बी इजीली रिलीज्ड इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर. रिड्यूस द साइड इफेक्ट. यस, नैनो साइज अगर आपका रहेगा, साइट स्पेसिफिक रहेगा, तो स्पेशली we can control the biodistribution of the drug, we can control the distribution of the drug as well as the pharmacokinetics of the drug and reduce the side effect. आप अपनी ड्रग को सिर्फ एक टारगेटेड साइट पर पहुंचाते हैं तो we can definitely minimize the side effects. Sustained control release possible है. Diverse route of administration है. आप नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के साथ देखोगे वेरियस रिसर्च इज गोइंग ऑन कि आपने एक सिंगल नैनो पार्टिकल्स बनाया एंड इट कैन बी
it can be given to a patient by a very different routes. We can use a colon specific drug delivery system. We can through the parenterals, through nasal, through ocular also. Research is going on this also, through skin, transdermal. Different type की routes available हैं through which we can easily deliver the nano drug delivery system. Increase the drug stability. हमारी अधिकतर जितनी भी ड्रग्स होती हैं दे आर अनस्टेबल इनसाइड द बॉडी एनवायरमेंट ड्यू टू द in the stomach, due to their in the stomach, because many drugs are not uh, stable in the stomach environment. They are not stable in certain एंजाइम डिग्रेड हो जाती हैं कुछ ड्रग्स. जब आप अपने नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के साथ ड्रग इंसर्ट करते हैं तो आपकी ड्रग डायरेक्टली टारगेटेड सेल्स पर पहुंचती है, एंड वेयर द ड्रग इज हैविंग द सुटेबल एनवायरमेंट एंड दे कैन इजिली प्रोड्यूस देयर थेरेपेटिक इफेक्ट. सर्टेन लिमिटेशंस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बात की थी कि कुछ लिमिटेशंस पॉसिबल हैं हमारे, जिसके कारण हम नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम को कहीं ना कहीं पे कुछ और रिसर्च करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है. लिमिटेशंस में भी मेन एक्सपेंसिव है, क्योंकि बिकॉज इट्स रिसर्च टेक्स सो मेनी ईयर्स. आपको एक लीड मॉलिक्यूल डिस्कवर करने के लिए और इन्वेंट करने के लिए अराउंड 10 ईयर्स लगते हैं. और यहाँ पर हम एक नैनो बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे अगर प्रॉपर रिसर्च की जाए फ्रॉम लैब to the from the market launching, so we just require so many in vivo and in vitro characterization, and it is very expensive. Research में कुछ expensive भी है, tedious भी है. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें ये इसलिए it generally raised its cost and insufficient knowledge about the nanoparticles on biochemical pathway. अभी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जहां पर हमें ये देखने की जरूरत रहती है कि नैनो पार्टिकल्स हाउ दे वर्क, हाउ दे जनरली डील विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल्स. आपके जो एंजाइम्स हैं उनके साथ आपके नैनो पार्टिकल्स किस तरीके से टारगेटेड साइट पर भी क्या रिएक्ट कर रहे हैं, रिसेप्टर्स के साथ किस तरीके की अटैचिंग है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हैं, अगर नैनो पार्टिकल्स का जो भी आपका पॉलीमर डिग्रेड होता है, ड्रग आपकी कितने टाइम तक वहां पर सर्वाइव करती है, ये सारी चीजों में अभी still more and more research have to gone from regarding this biochemical pathway, nanoparticles role on certain these cycles, and unpredictable genotoxicity. Various monoclonal antibodies are also used in the cancer treatment. कई ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं विच आर जस्ट लाइक द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. कई ऐसे लिगेंड्स रहते हैं, सरफेस लिगेंड्स भी आर यूज्ड सो दैट द नैनो पार्टिकल्स डिलीवर ओनली टू द टारगेटेड साइट्स. वहां पर कुछ अगर जेनेटिक टॉक्सिसिटी दे कैन क्रिएट. सर्टेन नैनो पार्टिकल्स आर ऑल्सो कार्सिनोजेनेसिस. बेसिकली नैनो पार्टिकल्स आर वर्क अगेंस्ट द कार्सिनोमा सेल्स, बट कुछ ऐसे कुछ मेटल नैनो पार्टिकल्स लाइक कोबाल्ट नैनो पार्टिकल्स हुए, निकल नैनो पार्टिकल्स हुए, दे आर रिपोर्टेड दैट दे कैन कॉज द कैंसर. सो कुछ इस तरीके के नैनो पार्टिकल्स पे रिसर्च इज गोइंग ऑन, और इनको इवेलुएट करने के लिए हमें ये सारी चीजों के टेस्ट, ये सब चीजें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने पड़ते हैं फॉर checking out whether they can work, they are affecting the genes, they are affecting, they are the carcinogenic तो नहीं है. तो इस तरीके के कुछ बहुत सारे मेटल नैनो पार्टिकल्स हैं जिन पर कुछ कार्सिनोजेनेसिस देखा गया है. Elimination and metabolism, different type के materials we used for developing the nano particles, nano structures. So their elimination, their metabolism, we have to just study that कि सारे materials किस तरीके से body के अंदर एक uniformly eliminate हो रहे हैं, metabolized हो रहे हैं, that we have to look it out. So these are the certain nanomaterials used, and like quantum dots, fullerenes, dendrimers, liposomes, nanorobots, nanoshells, nanosensors. You can see ये सारे these
all are in the range of 1 nanometer to 100 nanometer के रेंज में रहते हैं. some little what हम स्पेसिफिक जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं वो 1 से 100 नैनोमीटर के लिए स्पेसिफिक माने गए हैं, लेकिन फिर भी while designing and while fabricating 1 nanometer to 1000 nanometer पार्टिकल्स दे आर डिजाइंड. ये अलग अलग शेप और साइज के रहते हैं. तो आप देख सकते हो कुछ ये इस तरीके के नैनो पार्टिकल्स, इनकी रेंज आप 1 से 1000 नैनोमीटर तक भी रहती है. डिफरेंट टाइप के नैनो पार्टिकल्स लाइक फ्यूलरेंस, डेंड्राइमर्स. So if we discuss about the fullerenes, these are the allotropes of carbon. कार्बन एक ऐसा मेटल है which is nowadays used in the various forms for developing the nano drug delivery system. Like nowadays the graphene is uh, receiving graphene is using as a uh, very effective nano material. ग्राफीन के बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स, नैनो कंपोजिट्स, नैनो शेल्स डिस्कवर हो रहे हैं. फ्यूलोरेंस भी एक तरीके का एक एलोट्रॉप्स है कार्बन का, जिसके अंदर कार्बन एटम्स को डिजाइन किया जाता है. डेंड्राइमर्स में भी कार्बन एटम्स और इसी के साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं. लाइपोसोम्स आप देख सकते हो जिसमें हम फॉस्फोलिपिड्स यूज करते हैं along with the cholesterol, and then with the buffer they are used. So they generally form the bilipid layer and surrounding around the aqueous core. Nanorobots, these are the very little devices which are used. In further slides we can see their uses. Nano shells, एटम्स को आप कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो दैट वी कैन इजिली डिजाइन द नैनो शेल्स. आपके क्वांटम डॉट्स, यहाँ पर भी हम कार्बन एटम्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर को यूज करके, कोर एंड शेल को यूज करके हम यहाँ पर कुछ ऐसे नैनो साइज डिजाइन करते हैं. नैनो सेंसर्स आर यूज्ड व्हिच आर यूज्ड एज अ गुड कंडक्टर आल्सो. सो here we can see their advantages. Liposome dendrimers, we can see the nanotubes in the tube form. Quantum dots, nanogels, it's like the polymers which are embedded in the matrix type system. Measles, nanocrystals, polymer metal nanoparticle. These all the systems, they have the high specificity, and those reduction is possible. Yes, because we have to use a very little amount of drug. आपको यहाँ पर थेरापेटिक एफिकेसी के साथ साथ नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारा डोज साइज भी रिड्यूस हुआ है, बिकॉज नाउ अ टाइम द डोज हैज नॉट टू ट्रेवल द होल पार्ट ऑफ द बॉडी. आप टारगेटेड और साइट स्पेसिफिक नैनो सिस्टम्स डिलीवर कर रहे हो, तो जितना स्पेसिफिक डोज है which can affect the diseased cell, आपको उतना ही डोज इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. यस, वी कैन से दैट डोज रिडक्शन इज पॉसिबल. देयर द डाइवर्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इनको आप अलग अलग तरीके के डाइवर्स सिस्टम्स से हम डिलीवर कर सकते हैं. दीज ऑल द कैटेगरीज कम अंडर द नैनो बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स. So with the ability to arrange the atoms, molecules or supramolecules in a defined structure, we can develop the various type of nano-based system. ये जितने भी हमने अभी नैनो सिस्टम्स देखे हैं, आप इन सब के अंदर अगर अलग अलग तरीके से एटम्स की डिजाइनिंग कुछ इस टाइप का आप डिजाइनिंग कर सकते हैं. डिफाइंड स्ट्रक्चर अगर वी कैन क्रिएट, सो वी कैन डेवलप द वेरियस टाइप ऑफ नैनो बेस्ड सिस्टम. Here we can see the different size of the water molecule hemoglobin, and we can see the आप यहाँ पर जो एक गोल्ड एटम को यूज करके लाइपोसोम हम यहाँ पर अगर डिजाइन कर रहे हैं, फ्यूलोरेंस डिजाइन कर रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब डिजाइन कर रहे हैं. ग्राफीन एक बहुत अच्छा नैनो कंपोजिट स्ट्रक्चर है. Here the molecules, carbon atoms, they are arranged in such a composite way that we can develop a very small nano based system. And graphene nowadays it is using in a various type of engineering, as well as in the engineer based as well as in the medicine based devices. बहुत सारे इसके nano particles and research is going on this. So carbon एक हमेशा is the best choice of atoms which is basically used for the nano structure designing.
if we talk about the liposomes, Sabina, I think many people have heard about the liposomes. The lipid systems are used there, but the dendrimers and fullerenes, dendrimers and fullerenes, these are the uh, डिफरेंट टाइप ऑफ नैनो बेस्ड सिस्टम. यहाँ पर कुछ तीन चीजें रहती हैं डेंड्राइमर के. if we see the single moiety of the dendrimer, you can see it is divided into the three structure. First, the core, which consists of the, जिसे हम फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द कार्बन और द हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पर जो मेन एटम्स रहेगा. देन फ्रॉम हियर the functional groups, you can see the light blue, sky blue color balls. These are the functional groups. You can use two or more type of functional groups which are arranged in such a manner that they give the they resemble the branches type. That's why the dendrimers are also called the branch drug delivery system. यहाँ पर अलग अलग तरीके से branches type का resemble systems करते हैं यहाँ पे. And these branches, they are so arranged that they give the generation. If we use the functional group, अगर आपका पहला joint है, second joint है, and they make the branches, this we call the first generation. Again, if we join the another functional group around this, then we can say it as a second generation. तो different generation depend करती है आप जिस तरीके से इनके branches को यहाँ पर locate करेंगे. Then third one is the सरफेशियली पे जो आप जेड देख रहे हो, दीज आर द टर्मिनल ग्रुप्स विच आर सरफेस लिगेंड्स रहते हैं. कुछ हम यहाँ पर एंटीबॉडीज भी अटैच कर सकते हैं सो दैट दे कैन मेक इट एज अ साइट स्पेसिफिक. एंड दीज आर द टर्मिनल ग्रुप्स रहते हैं. इन जेड को हम टर्मिनल ग्रुप्स बोलते हैं या फिर हम सरफेस लिगेंड्स बोलते हैं विच आर अरेंज्ड. एंड दीज आर द मेन इंजीनियर. Just we can say they just locate or then they help in diseased site. यही मेन हमारे सिग्नल स्ट्रक्चर्स रहते हैं. So dendrimers consist of core, branches, terminal, functional groups as we have discussed. Fullerenes जो रहती हैं without before discussing about the drug release mechanism, फ्यूलरेंस जो रहती हैं इनके अंदर हम कई तरीके के कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स यूज करते हैं. एटम्स दे आर अरेंज्ड इन सच अ वेल मैनर that the carbon atoms are joined in such a well manner that we just get either the tube like structure or we can achieve the spherical like structure. So इस तरीके से different structures को हम just use कर सकते हैं. Polymer is the best. Different type of polymers are used. आपने देखे होंगे एल्जिनेट के भी. और polymers के साथ if we attach the some metals like gold nanoparticles, gold chitose nanoparticles, silver nanoparticles, silver chitose nanoparticles, these there are the different types of such type of metals. We just have to check whether these metals are not affecting the biodistribution या फार्मेकोकाइनेटिक्स को इफेक्ट तो नहीं कर रही है बॉडी के. ये सारी चीजों को हमें चेक करना पड़ता है. When we talk about the drug release mechanism from the nano carrier, you can see there are the certain mechanism like dissolution, diffusion, chemical reactions, stimuli sensitive reactions. अगर आपका का जो भी सिर्फ nano particles, you can see this is it's a ball like structure. This is the single nanoparticle. These orange balls, these are the drug particles. अगर आपका नैनो पार्टिकल्स बॉडी के अंदर इन विट्रो ड्रग रिलीज मैकेनिज्म अगर आप देख रहे हो और डिसोल्यूशन से हो रहा है तो यू कैन सी द पॉलीमर. ये जो भी इंट्रैप्ड आपका पॉलीमर है जिसके अंदर आपने ड्रग को बायोएक्टिव एजेंट या ड्रग को आपने इनकैप्सुलेट किया है, इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग. दिस विल हैपन इन द डिसोल्यूशन. डिफ्यूजन में यू कैन सी Karuna, can you please? I want to request all the participants to mute yourselves. Karuna, Raghuvanshi, are we audible for you? Please mute yourself.
Then we can see the from the diffusion based drug release mechanism. There we just use some osmotically controlled polymers or some basically some type such type of polymers which are having the diffuse mechanism. Here the polymers start shrinking in a very small, in a very controlled manner, releasing the drug start diffusing through the this rate controlling permeation membrane. दिस विल हैपन बेसिकली इन द ट्रांसडर्मल रूट, जहां पर हम ट्रांसडर्मल पैचेस या कुछ ऐसे लाइपोसोम्स वगैरह हम इंट्रैप करते हैं नैनो पार्टिकल फॉर्म्स में. आप नैनो पार्टिकल्स देखोगे, नैनो स्फीयर्स देखोगे, फ्रॉम देयर द ड्रग विल रिलीज इन सच अ डिफ्यूजन मैकेनिज्म. अगर आप ऐसा पॉलीमर यूज कर रहे हैं विच इज हैविंग द रेट कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज, then if we then just have a look on the chemical reaction type drug release mechanism. Here we just use certain type of the pH sensitive environment or some hydrolysis mechanism. Some basically the enzymes are used. ये नैनो पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि दैट व्हेन दे रीच द environment of certain enzymes, then only they will be able to release the drug. And drug is, you can see the orange dots here, they are attached with certain groups, certain organic groups. These organic groups, they here they will react and they will form the hydroxyl group, and the drug will release in in this way. So pH environment, hydrolysis enzymes, they just give the chemical reaction based drug release. And in certain cases when we use the stimuli sensitive, यानी कि आपकी ड्रग को पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर जहां पर ड्रग आपकी नैनो बेस सिस्टम में या एम्बेडेड है, यू कैन सी द स्टिमुलाई सेंसिटिव साइट. आप देख सकते हो द ड्रग हियर इट इज clustered in the polymer embedded matrix, and it will release only when something trigger this nanoparticle. जब कोई चीज trigger करेगी nanoparticles को, then only this nanoparticle will be able to release the drug. For example, like this mechanism, certain mechanism, ions are used, some light sensitive, some ions are used. They just in this environment, they just when they react or when they attach to the surface of the nanoparticles, this polymer will start degrading and releasing the drug. So हमने 4 mechanisms देखे basically for releasing the bioactive agent from the nanoparticles. So now when we talk about the advancement of nanoparticle nanodrug delivery system, you can see the various field where these nanoparticles are using for the treatment, for the diagnosis and prevention purpose, like theranostics, you can see targeted therapy, you can see the analytical imaging tool, you can see tissue engineering, and safety and compatibility with the safe and compatibility, biocompatibility manner. These nano-based drug delivery system are efficient in using as a theranostics की जब हम बात करते हैं, so the both things are going on simultaneously, therapeutic effect as well as the diagnosis. अगर हम, if we are able that we can with the nano-based drug delivery system, we can simultaneously diagnose the disease, diagnose the type of the cancer, and provide the therapeutic effect, that is called the theranostic. Simultaneously diagnosis भी हुआ and therapeutic effect भी produce हुआ, तो theranostics में यूज हो रहा है. इमेजिंग टूल बेसिक बहुत सारे एनालिटिकल चीजें हैं जहां पर हमें एनालिसिस इमेजिफाइंग करना रहता है सेल्स को, डिजीज सेल्स को, तो वहां के डायग्नोसिस में भी नैनो बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल. टारगेटेड थेरेपी ड्रग डिलीवरी में तो है ही नैनो पार्टिकल्स का, नैनो बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का एक मेजर रोल. टिश्यू इंजीनियरिंग, लाइक इन बायोटेक्नोलॉजी में भी वी आर यूजिंग दिस nano-based drug delivery system, so that we will be able to design very painless vaccines and vaccines for certain those diseases
for which not the proper treatment is available. जहाँ पर proper treatment भी available नहीं है, वहां पर भी हम अगर specifically vaccines को discover करने में nano based drug delivery system के साथ successful rate देखा गया है. And future advancement of nano based drug delivery system is going on, and the future aspects में भी आप देखोगे in vaccine designing and fabrication, nano based drug delivery system, nanotechnology is playing the major role. So nanotechnology is being developed, and in the field of medicine they are working as for these certain things I have summarized here, like nanobots. I have enumerate here certain the field in which nanotechnology is playing a major role, like nanobots, nanocomputers, cell repair, cancer treatment, aging, cardiac disease, drug delivery, seizures, medicinal diagnostics, vaccines. And यहाँ पर recent advancement is also going on, as well as the future prospect भी आप इन सारी fields में आप देख सकते हो. When we talk about the aging, it means the nano-based drug delivery system is also playing a crucial role in cosmetics also. जब हम aging की बात करते हैं तो aging is related with the cosmetic. The current applications of nanotechnology in medicine में अगर हम देखें तो vaccine development, nanoparticles vaccine develop कर रहे हैं with the good immunogenicity and stability, antigen based, facilitate the target drug delivery, slow release, nanoscale particle size. बहुत सारी अलग अलग different types की vaccines are discovering, like which are having the very which are having not so much pain. कुछ painless vaccines are also discovering here. And nano based drug delivery system का फायदा ये है कि in this we can design the vaccine in the form of the so small nanoparticles, and we can attach certain antibodies also there. So they are inserted as a biosensors also, they are inserted as a nano devices, and whenever they get the antigen, they can react with those, they can fight against those antigens, releasing their antibodies, and they can be remain in the human body for a long period of time. ऐसी vaccines को हम एक इस तरीके से भी use कर सकते हैं कि we can insert them for the long period of time. नैनो डायग्नोस्टिक्स जो हमने थर्नोस्टिक्स में भी देखा है, नैनो डायग्नोस्टिक्स आर ऑल्सो द गुड प्लेइंग गुड रोल, एंड नैनो डायग्नोस्टिक को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, दैट इज द मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड बायोलॉजिकल सेंसर. सो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स इज द अनदर एप्लीकेशन. This technology is the construction of nano electronic devices. कुछ nano sensors, nano electrodes लगा के एक minute nano sized device are discovered, and they can detect the concentration of the biomolecules in the real time. RT-PCR में भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं, और कैंसर थेरेपी में इनका मेडिकल डायग्नोस्टिक्स का ज्यादा यूज होता है. they can detect the biomolecules. आप इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज नाउ रिमेनिंग इन द बॉडी, या हाउ मच ट्रीटमेंट इज नेसेसरी. at any time you can find out the biomolecule concentration, and through these devices we can also insert the small concentration of the drug molecule. अब जो भी चीजें अगर आपने किसी तरीके का इम्प्लांट या इंसर्ट भी बॉडी के अंदर अगर रखा हुआ है, and we have to find out this implant is working properly or not, and how much bioactive agent is remaining in that particular implant. So we can use these nano electronic devices. Nano devices, they can find out from throughout your body or throughout your implants or insert that how much drug is remaining, but कब हम इसको we can remove that particular implant, particular insert. Like बहुत सारे चीजों में हम इस तरीके के डिवाइसेस यूज भी करते हैं. सर्टेन कई बार कुछ ह्यूमंस को ये भी प्रॉब्लम रहता है कि सर्टेन सेंसर्स या सर्टेन डिवाइसेस दे आर इंसर्टेड. फॉर एग्जांपल द पेसमेकर इज इंसर्टेड इन द कार्डियक पेशेंट्स, और अगर
after 5 years, 8 years, 10 years, if the problem arising again in their body, then these nano devices they just diagnose the working of the pacemaker. आप इसे ये diagnose कर सकते हैं. इसी तरीके से डायबिटिक पेशेंट्स में भी कुछ इस तरीके के डिवाइसेस इंसर्ट किए जाते हैं which will release the insulin whenever the blood sugar level increases. So इस तरीके के nano electronic devices are also working for in the diabetic patients. If we talk about the biological sensors, nano sensors, ये एक mini size nano electronic devices होते हैं. They interact with the single cells and they are in the in vivo. They can find out. They can sense the protein mutations, whatever the protein sensing protein mutations going on inside the cells, and they could be used not only in the basic biological research but also in the health monitoring. Like बहुत सारी इस तरीके की कुछ अमीनो बेस्ड डिजीजेस हैं, कुछ प्रोटीन बेस्ड डिजीजेस भी रहती हैं जहाँ पर प्रॉपर डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड, and these nano sensors they can find out the functioning some structural changes in the proteins, genome changes. तो ये genetics वगैरह से भी related है और बायोटेक्नोलॉजी में these nano sensors का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. These are certain novel nanomaterials for vaccines. Liposomes, कुछ nanoparticles, PLGA nanoparticles, PG nanoparticles, peptide nanofibers are using in this. And the nanoparticles in cancer therapy. You can see here, cancer is a disease which is in which many types of drug delivery system are working, but still we have not such type of success rate in fighting against the cancer. And nano-based drug delivery system are working in this direction, and research is going on day by day on this. And we have generally achieved a success rate also in fighting against the cancer. You can see how the nano-based drug delivery system works in the cancer therapy. You can see here the cancerous cell through this diagrammatic lines. You can see the cancerous cell in the green cells and pink cell. These are the healthy cells. So nanoshells are available. Nanoshells are having the ability to just cross or to just find out these cancerous cells only, and they can fight or they can kill only those cancerous cells. Nano devices का यही एक role है nano based drug delivery system का. They are in such a small size that they can easily can entrap or can enter inside the cells tight junctions. If we attach some surface ligands or some antibodies or some signal based device structures or functional groups on these nanoshells, then they will be easily able to just recognize only the cancer cells, and in that way we can save the healthy cells. So nanoparticles nanoshells are having this capability. As we can see, they just entrap or survive the cancerous cells, and when the and that way when we just give the chemotherapy after these injections of the nanoparticles, you can see these nanoparticles, they are sensitive against the infrared lights. They start attaching on the surfaces of the cancerous cell, and when we get the radiations, they start destroying the cancerous cells only. So you can see in that way we can save our healthy cells and can kill only the cancerous cell. Nowadays what's happening, abhi सिर्फ chemotherapy में क्या होता है, we just have the antibiotics and they are just with the radiation. These antibiotics are not able to recognize the cancerous cell and healthy cells, so they are start killing the both type of cells. Chemotherapy is not dangerous, but their recognition और जो एक selective बोलते हैं selection जो एक होता है कि
कैंसरस सेल को ही किल करना है, हेल्दी सेल्स को किल नहीं करना है. That is not possible with this simple chemotherapy. That's why chemotherapy is so much dangerous for the cancerous patient, and they are also affecting the immunity. बट अगर आप नैनो पार्टिकल्स के साथ कीमोथेरेपी, रेडिएशन बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम थेरेपी देते हैं, तो वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज एंड देयर विल बी द सिलेक्टिव damage or destruction of the cancerous cell. So in that way, nano-based drug delivery system are having the good success rate in fighting against the cancer. In 2023, a team of the research work from the Sloan Kettering Cancer Center, and they reported their novel nanoparticle based drug delivery approach. This is a recent research, that's why I have mentioned here. Novel nanoparticle based drug delivery approach that facilitate more effective and targeted delivery of anti-cancer drug to the medulloblastoma cancer cell. And by leveraging the drug loaded fucoidin based nanoparticles, they just transport the cancer treatment. It is जो ड्रग बेस्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, फिकोइडिन के लिए ये रिपोर्टेड किया गया है. They are having the ability to cross the blood-brain barrier, and they are having the specific specificity against fighting the tumor, and while sparing the healthy brain tissues. So आपने देखा कि जिस तरीके से अभी इन like this diagram, we can just correlate this with this research work कि the in nanoparticles, they are able to cross the blood-brain barrier and they can fight against the tumor in the brain tumor, and they just and that way they just save the healthy brain tissues and healthy brain cells. So this is the recent work. In this way, the future prospect is here कि अभी 2023 में we are if we are if we are able to fight, if we are able to just do the research work on this type of cancer, then in further years we will be surely we will be much more able to fight all the types of the diseases, all the type of the cancerous diseases. So here we can see inside the blood vessels, inside the barriers, they can easily, these nanoparticles are easily able to entrap against the disease cell, disease cancerous tumors. इस तरीके से nanoparticles, they will be able to fight against the tumorous waste. Now nanorobots. Nanorobots भी एक अलग तरीके की मशीनरी है which is designed to perform the various tasks and in the nano scale dimensions. बहुत सारी तरीके की चीजों में ये यूज किए जा रहे हैं नैनो रोबोट्स. These are the so many mini size devices, and they are so much attached. They are having such a type of signal और surface ligand attachment. कुछ इस तरीके के signals इनके साथ attach किए जाते हैं कि they can recognize any type of the clot. और nowadays इनको कई तरीके के, जब हम कार्डियक डिजीजेस में देखते हैं, इनको कई तरीके के आप देख सकते हो कि क्लॉट डिसॉल्विंग डिवाइसेस भी यहाँ पर अवेलेबल है कुछ नैनो रोबोट्स के रूप में, which are efficient in fighting against the thromboembolism. अगर आपके ब्लड वेसल्स में किसी तरीके का क्लॉट है, किसी तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, नैनो डिवाइसेस दे स्टार्ट recognizing that clot, and then if we just incorporate the medicine inside a bioactive agent inside these devices, they start releasing the device. So in this way they work as a thernostat. साइमल्टेनियसली डायग्नोस किया आपका क्लॉट और साइमल्टेनियसली ही यहाँ पर थेरेपेटिक एजेंट को भी रिलीज करके क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे. तो नैनो रोबोट इज हैविंग द एप्लीकेशंस इन कैंसर, कैंसरस सेल को रिकॉग्नाइज करना, डायबिटिक कंडीशन जहाँ पर ब्लड शुगर लेवल को भी रिकॉग्नाइज करके इंसुलिन रिलीज करना. वेरियस सर्जरी में हम नैनो रोबोट्स को यूज किया जा रहा है. डेंटिस्ट्री में भी. Tejas, please mute yourself.
डेंटिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे ये डेंटिस्ट टीथ रिलेटेड कई बार कुछ एक्सीडेंटल केसेस रहते हैं जहां पर टीथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ गमी एरिया से, कुछ इनसाइड द कुछ पस हैं, कुछ सेल्स हैं, अगर ये रप्चर हो रही है तो हियर वी कैन आल्सो insert some nano type of capping. Nano type devices are nowadays also रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस. अभी इन पर रिसर्च चल रही है. कुछ नैनो साइज की कैपिंग्स और कुछ इस तरीके के भी डिवाइसेस डिजाइन किए जा रहे हैं विच वी कैन यूज इन द रप्चर्ड टीथ और एक्सीडेंटल केसेस इन डेंटिस्ट्री. अगर कुछ अलग से यहाँ पर कुछ रप्चर हो गया. जीन थेरेपी में भी वी कैन यूज दीज नैनो रोबोट्स and कुछ genetic devices to diagnose the genetic disorders. These nano robots are working. They generally evaluate the DNA से भी छोटा nano devices है and they can easily find out the अलग टाइप की जो भी बेस अरेंजमेंट हो गए हैं डीएनए में. they will be able to find out such impairing in the DNA base arrangement and then only we can find out the ट्रीटमेंट फॉर दैट. पहला तो डायग्नोसिस पर्पस है. जब भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात होती है मेन थिंग होती है कि वहां पर प्रॉपर एक डायग्नोस करना कि जेनेटिक की किस बेस पेयर में यहाँ पर इम्पेयरमेंट हो गया है एंड देन ओनली वी कैन डिजाइन द ट्रीटमेंट फॉर दैट. If we talk about the current status of marketed nanomedicines, अगर हम अभी का जो सिनेरियो देखें तो FDA in 2016 they have approved 51 nanomedicines. By 2016 40% which were in clinical trial and it is between 2014 and 2018. This is according to the FDA and formulated जो भी nanomedicines हैं they are approved by the Food and Drug Administration and classified into various type of disease is categories. That's why you can see हमने कई तरीके के पॉलीमर बेस्ड नैनो मेडिसिन भी देखा है. कुछ मीसल्स भी हैं, लाइपोसोम्स भी हैं, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, नैनो क्रिस्टल्स भी हैं. इन सबको एफडीए ने कुछ अलग अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड शेप दे आर कैटेगराइज इन द वेरियस कैटेगरीज, वेरियस टाइप्स. पॉलीमर जो नैनो मेडिसिन रहते हैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. they are using research is easy to perform on their in vitro and in vivo aspect. इनका इन विवो और क्लिनिकल ट्रायल भी अब इतना रिसर्च होने के बाद काफी हद तक इजी हो चुका है एंड वी कैन इन्फ्लुएंस देयर solubility, biocompatibility. We can check out their half life, bioavailability and controlled release manner भी easily available है आप पॉलीमर नैनो मेडिसिन के साथ प्रिपेयर करना. So पॉलीमर बेस्ड जो नैनो मेडिसिन है, नैनो पार्टिकल्स हैं, दे आर यूजिंग इन कॉस्मेटिक्स ऑल्सो. दे आर यूजिंग इन वेरियस टाइप ऑफ therapy, cancer therapy and cardiac therapy also. Here you can see certain PG based branded nanoparticle based drug delivery system which are formulated and available in the market like Paxon, Alasta and Pligrady. These are they use polyethylene glycol polymer for their formulation and resulted in the increased half life and success in achieving a good bioavailability. Clinical trials में they have achieved a good bioavailability. कुछ मीजल बेस्ड भी आप देख सकते हो नैनो पार्टिकल्स हैं. आई हैव enlisted here like Estrasorb, Wind 014, Cala 01. These are the controls based release forms हैं and they generally incorporated the lipophilic drug, hydrophobic drugs इनके अंदर incorporate किए जाते हैं. Liposomes are also available in various cancer therapy, in various fungal disorders. As we can see, कि liposomes are also available. Doxil, जिसमें doxyribosin and use किया जाए BDK के liposomes based nano based drug delivery systems which are now times available in the market and
Antibody drug conjugates are also available, and they also are prepared with the use of pegylation. And we nanoparticles का जो अगर हम method of preparation देखें तो it is a type of is a easy method. You have to use you have to choose the good polymer, and along with that you have to choose a good cross linker. एक गुड क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो पॉलीमर के साइज को मॉड्यूलेट करने में और स्ट्रक्चर को चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, एंड दे मेक ऑल दी सेल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सच अ यूनिफॉर्म वे कि कुछ इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग की जाती है पॉलीमर्स के साथ, कुछ इस तरीके से मेटल्स और फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच किया जाता है कि they generally form the nano-based nano-size system. Future aspects, if we talk about the future aspects, तो future aspects में nano antibiotics अब simply सिर्फ हम antibiotics use नहीं करेंगे, आने वाले time पे we will use the antibiotics in the nano form, in the nano-based drug delivery system, and they will be more effective against the bacterial and viral infections. यहीं पर हम नैनो रोबोटिक माइक्रोबायोरॉप्स भी यूज करेंगे. ये एक तरीके के आर्टिफिशियल फेगोसाइट्स रहते हैं, एंड जिनको हम माइक्रो बायोरॉप्स बोलते हैं. दे कंट्रोल द ब्लड स्ट्रीम, दे कंट्रोल द क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, दे कैन कंट्रोल द डाइजेस्टिंग अनवांटेड पैथोजेंस including bacteria and convert them into the inert material. So nano robotic biobiots will be the boon for us in upcoming days, in upcoming times, because they यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की इतनी ज्यादा डायग्नोसिस will be very much easy for us. यहाँ पे डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इजी होने वाला है. पैथोजेंस कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड और बहुत अच्छा साइट स्पेसिफिक भी रहेगा. एंड एक तरीके से किसी भी तरीके के हमें यहाँ पर साइड इफेक्ट्स को नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर they are not killing, they are making these systems, these pathogens into the inert material. So inert material यानी कि एक harmless sugar या amino acid में convert हो जाना, जो हमारी बॉडी के अंदर से पड़ा रहेगा, and they will not affect our body in the future times also. नैनो स्पंज भी बहुत पॉलीमर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं. दे आर कोटेड विद द RBCs and they can absorb the toxin and remove them from the bloodstream. Nano sponge, nano robotic microbiologs, nano antibiotics, they will make our surgical procedure very easy in the upcoming, in the future time. ये सारी ही जो टेक्नोलॉजीज हैं, इन सब का यूज इन सर्जिकल मेथड्स में यूज होगा. और यहाँ पर दे विल प्रोवाइड अस अ गुड, एक कहते हैं पेशेंट कंप्लायंस, और एक पेशेंट कंप्लायंस और आफ्टर द जो सर्जिकल पेन दैट वी हैव टू गॉन थ्रू आफ्टर द सर्जरी, जो 1 या 2 मंथ्स का पेन रहता है, इन सारी चीजों को ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इजी और हमारे लिए कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा इजी और हल्का करने वाले हैं, क्योंकि इन सारी ये न्यू टेक्नोलॉजीज रहेंगी फॉर द सर्जिकल ऑपरेटिव मैनर. सो दिस टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर कुछ आने वाले टाइम पे इट विल वर्क एज अ डॉक्टर इनसाइड अवर बॉडी. मीन्स आपको जो भी और गैजेट्स, nowadays we are so much worried about our fat. As the age goes on, we have worried about our obesity problem, our aging problem. नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे इट विल स्टार्ट डिस्कवरिंग एंड डिजाइनिंग सच टाइप ऑफ गैजेट्स, कुछ इस तरीके के गैजेट्स, कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टैटूज, कॉस्मेटिकली भी और ड्रग डिलीवरी बेस्ड डिजीज कंडीशंस में भी यूज करने वाले हैं, कि हम इनको खुद एक डॉक्टर इनसाइड अवर बॉडी बोल सकते हैं. व्हेन वी यूज दीज गैजेट्स, दे ourselves, if we have the enhancement in the fat, they will start decreasing our fat. कुछ इस तरीके टैटूज वगैरह भी डिजाइन होने वाले हैं.
इलेक्ट्रॉनिक टैटूज रहेंगे, दे कैन सेंस अवर वाइटल साइंस। किसी भी तरीके की अगर एजिंग हो रही है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है, कुछ और तरीके के हमारे बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल्स का एनहांसमेंट हो रहा है, लाइक शुगर लेवल बढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि सोडियम या क्लोराइड आयंस के बीच में इम्बैलेंसमेंट हो रहा है, तो ये गैजेट्स ना बहुत जल्दी तरीके से एक तो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे हमारी प्रॉब्लम्स को, और साथ में अगर इफ वी इंसर्ट दैम इनसाइड अवर बॉडी, तो दे जनरली check out whether the fat is increasing, they will decrease the fat, aging problem is increasing, they will maintain our collagen. So ये सारी चीजें हमारे लिए आने वाले टाइम पे with this tiny gadgets, with this tiny nano size equipments, ये सारी चीजें हमारे लिए अपकमिंग जनरेशन में that will be more easy. तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। एंड हम किसी भी तरीके का इम्प्लांटेशन, जो इम्प्लांट्स हम यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं सेंसर्स अपनी बॉडीज के अंदर, ये सारा प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा इजी होना वाला है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। सो दिस विल बी द बून फॉर अवर जनरेशन। एंड ऑल्दो दीज टेक्नोलॉजीज माइंड, हालांकि ये सारी टेक्नोलॉजी अभी हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए रहेगा, काफी टाइम लगेगा इनको और रिसर्च में, लेकिन GlaxoSmithKline में ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस एंड दे हैव डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोस्यूटिकल. Now, you have heard about the nutraceutical. Here, the term come electroceutical. They have used some electrode-based devices, and which will make up जो भी हमारे electrodes वगैरह को use करके, electrons वगैरह को use करके, ions को use करके, they are creating the drug delivery system. They are creating some that delivery system which can use for the prolytic purpose. हमारे प्रोफाइलैक्टिक पर्पस के लिए भी इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स एक बहुत अच्छे डिवाइसेस रहेंगे, एंड गैलेक्सो कंपनी इज स्टिल वर्किंग ऑन दिस, एंड दीज डिवाइसेस दे आर वी कैन हियर कुछ इस तरीके से हम इन्हें इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो डिवाइसेस रहेंगे, इलेक्ट्रोड डिवाइसेस, दे विल फाइंड आउट द सेल्स, जो भी सेल्स रहेंगे नैनो बोर्ड्स की तरह ये काम करेंगे. They recognize the cancerous cells, they can recognize the diseased cells, tissues, and will start destroying them. So these nano devices will work like this. Upcoming future aspects में we can also we can also check that nano patch vaccine will also be there. हम देख सकते हैं कि कुछ आने वाले टाइम पे, अभी तक वैक्सीन किस तरीके से इंसर्ट की जाती है बॉडी के अंदर, थ्रू इंजेक्शन और ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. But after some time, there will be the nano patch vaccine, and they are inserted in the skin, and they are painless type. You can see here. बहुत ज्यादा ये एक बैंडेज साइज को नैनो पैच वैक्सीन के साथ नैनो बैंडेजेस भी विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द फ्यूचर टाइम, एंड वी कैन सी हियर द नैनो पैच. इट विल have the projection inside the immune cells, and in the dermal layers जो भी cells present रहते हैं, they will start stimulating that immune cells to release the beta cells and T cells. So nano patch vaccines will also be there in to use them, and they are very easy to insert to use by the patient. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ माइक्रोथिन स्मार्ट बैंडेज कैन क्विकली हील एंड मॉनिटर द वुंड. कुछ इस तरीके के अपकमिंग फ्यूचर एस्पेक्ट्स में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के डिवाइसेस भी आएंगे. जो नैनो बेस्ड डिवाइसेस रहेंगे, ये एक स्मार्ट बैंडेज रहेंगी. दे हैव सम फंक्शनल ग्रुप्स एंड विच विल ऑसिलेट एंड स्टिमुलेट द क्विकली हील द वुंड. अभी हमारी वुंड हीलिंग में कुछ अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द
depth of the wound, we just take around 1 or 2 weeks, 1 to 2 weeks, 3 weeks for the wound to completely heal. After the surgery, हमें पूरा month या we have to take around the rest for the 2 months to properly heal. But after after the development of this micro thin smart bandage, these bandage will be used after the post operative surgery, and they will make our deep wounds to heal in a very proper way. बहुत efficiently, quickly heal करेंगे after surgery हमारी wounds को, and they will also monitor if certain pus या if certain mishappening is going on inside our cells and tissues. तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा हमारे लिए, माइक्रोथिन स्मार्ट बैंडेज, जो हम आफ्टर सर्जरी यूज कर पाएंगे, और दे विल मॉनिटर अवर वुंड्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स. So this is all from my side. Thank you so much, and if you have any questions, you can please ask. Thank you so much, ma'am. And I think it's a very nice presentation. I think participants will get a very good experience from your slides and like knowledge and information. So I want to request all the participants, if you have any queries, just put in the chat box, or you may ask by raising your hand. If you have any query, you can ask. Unmute yourself. Yes, participants, if you have any doubts, please ask. I will be pleased to we can have the discussion if you have any queries. कुछ भी आपके दिमाग में हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं. Ma'am, Okay. we got yeah. Could you please explain about what is the role of zeta and particle size in nano formulation? Yes, okay. Particle size and zeta potential. This is the main characterization parameter for nanoparticles. बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. If you are going for any research, you are preparing the nanoparticles, you have to find out the particle size, because this is what we can say. ये एक ऐसा सिस्टम है, when we are preparing the nanoparticles, आपने सारी चीजें ली, there is not a particular formula. You have to go through the different literature review, जिनको आप देखकर फिर अपने particles, आप अपना polymer select करते हैं, उसका क्या आपको concentration use करना है आप वो देखते हैं, क्या क्रॉस लिंकिंग एजेंट रहेगा, और आप जब इसे बनाना शुरू करते हैं लैब में, तो यू आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, यू आर टेकिंग द गुड, कहना चाहिए एक मैग्नेटिक स्टीयरिंग में, यू आर गुड टेकिंग द गुड स्टीयरिंग स्पीड, स्टीयरिंग टाइम, सोनिकेटर. लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी लगती है हमें एक नैनो पार्टिकल डिजाइन करने में, और उसके बाद पार्टिकल साइज आपको बाहर से इवेलुएट कैरेक्टराइज करना बहुत जरूरी है. देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड द नैनो पार्टिकल और इट इज इन द माइक्रोन साइज. तो नैनो पार्टिकल एक बहुत कैरेक्टराइजेशन बहुत जरूरी है. आपको पार्टिकल साइज आफ्टर प्रिपेयरिंग द नैनो पार्टिकल उसे कैरेक्टराइज इवेलुएट करना ही पड़ेगा. साथ में होता है जीटा पोटेंशियल. जीटा पोटेंशियल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट डिपेंडिंग ऑन दिस. जो भी हमारे सेल्स हैं, जो भी हमारी मेम्ब्रेन्स हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड. जीटा पोटेंशियल से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि whatever the on the surface of the nanoparticles, how much positive charges or what type of charges are there on the surface of the nanoparticles. आपके नैनो सिस्टम्स पे कौन सा साइज और कितना कितना जीटा पोटेंशियल प्रेजेंट है. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन estimate when you will deliver this delivery system, how it will interact with your diseased cells.
आपके डिजीज सेल्स के साथ ये किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। तो जीटा पोटेंशियल और पार्टिकल साइज, आप अगर बड़े साइज का पार्टिकल साइज का नाम उसको नैनो पार्टिकल बोल रहे हो, एंड इफ इट इज हैविंग द साइज अराउंड 600 नैनोमीटर, इट इज बेसलेस। आपकी रिसर्च अभी हुई नहीं है पूरी, आप ये मानकर चलिए आपको कहीं ना कहीं 200 नैनोमीटर के ही अंदर आपके नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। देन ओनली दे विल बी एबल टू क्रॉस द टाइट जंक्शन, देन ओनली दे विल बी एबल टू गिव द साइट स्पेसिफिक डिलीवरी। आई होप जीटा पोटेंशियल वाला क्वेश्चंस विल बी एबल टू Yes, ma'am. answer. Thank you so much, ma'am. Another one is asking, is it possible for the pharmacist with chemistry specialization to work on these technologies, or is there any other specific course we can pursue after B Farm? Ishika. I'm Yes. I'm working on it. Okay, okay. I'm a Sir, chemist, and right now I'm working in nanotechnology. yes. So Ishika, it's very quite possible. Like if you are going to research field, so subjects doesn't matter because it's a interdisciplinary topic. You have to know about chemistry, pharmacology, pharmaceutics, and pharmacognosy. So you need experience in every field, right, ma'am? yes, sir, definitely. Rohan Chore is asking, zeta indicates stability on formulation. If yes, then how? Zeta indicates zeta potential indicate. I think I have answered this. Zeta potential indicate the sustainability of your formulation. Yes, it is. When it is indicating the sustainability, that is directly linked with you, the stability of the formulation. When it is sustained, then only it will be the give you the stable formulation. I think, Rohan, have you satisfied with the answer? Another one is asking, nano shall minimize the side effect. It is possible for Uh, nanoparticles alone to carry out biomass pre-treatment uh, One second. without being coupled with any Pardon, enzyme. sir, who is asking? Is it possible for nanoparticles alone to carry out biomass pre-treatment without being coupled with any enzyme or acid? Yes, it is. It possible? Is it possible depending on your research? Means all the nanoparticles are not coupled with the enzyme or acid. Sometimes we use some other type of the alkaline substance also. Alkalinity भी अगर आप नैनो पार्टिकल्स में डिलीवर कर पा रहे हो तो दिस इज गुड फॉर योर सेल्स, बिकॉज वी नो कि जो हमारे सेल्स रहते हैं बॉडी के अंदर, सेल्स एंड टिश्यूज, दे ऑल्सो लाइक द एल्कलाइन इन्वायरमेंट। अगर आप नैनो पार्टिकल्स के अंदर जरूरी नहीं सिर्फ एंजाइम अटैच एसिड के साथ ही कपल्ड किया, आप विदाउट अटैचिंग दिस नैनो पार्टिकल्स भी डिजाइन कर सकते हो, कुछ लिगेंड्स अटैच कर सकते हो, कुछ एल्कलाइनिटी भी कॉज कर सकते हो। कई ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो इस तरीके से डिजाइन किए गए कि जब वो हाई पीएच अल्कलाइन पीएच में जाते हैं, दे विल बी द गुड फॉर द ट्रीटमेंट। तो कुछ इस तरीके से भी डिजाइन किया गया है जितेंद्र। And ma'am, it's also depend on the part of the body. Like if you're talking about the colorectal cancer, or you want to deliver in the colon, so there the pH is very high, like from 9, 10, 11. So Yes, yes, sir. it's really matter. And so any participants, do you have any query? Okay. I think, ma'am, there is no query from the participants. Yes, sir. So I want to request Dr. Harshita for a word of thanks. Dr. Harshita? Yes, sir, yes. Good morning, ma'am. I would just like to appreciate you for this wonderful presentation. It's really helpful, and I'm really amazed to see the applicability of these nanoparticles. I hope that it will help to all the participants too. So, very thank you, ma'am. Thank you very much. We have Thank another. you. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Thank you so much, Harshita ma'am. Thank you so much, Monu sir, for And giving me this ma'am, opportunity. another professor we have, Dr. Satish Kumar Sarankar. And I want to request Dr. Sarankar to vote of thanks.
and share your experience with this webinar. Thank you very much, Mr. Shukla. It was a great learning session. Madam has explained about the nanoparticles and the utilization of those in very well manner. I think all the participants may have got the benefit of this, and they will incorporate this kind of techniques by this session in their research work, and definitely will move forward for the development of new dosage form of the drug delivery system. Thank you very much, Madam. Thank you very much, Monu Shukla. Thank you very much, Dr. Harshita. Thank you. so Thank you much. so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Okay. So, Ma'am, Monu sir, you can just go ahead. yeah, please make me host, ma'am. I have a appreciation certificate for you. Okay, okay. One Just second. want to please, yeah. Yes. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Is my slides are visible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. So Oh, this is the appreciation certificate for you, ma'am. And thank you so much for giving your time, precious time, for 1 day webinar to Drug Chemistry Research Center. And thank you so much, ma'am. The session was very informative and knowledgeable towards all the participants. Hope they will enjoy and have some, may they have some queries. So I want to request all the participants who joined this webinar, they can also share their queries via email. Okay, so thank you so much, ma'am.